Today we are doing थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्लास 11th में भी हमने 3D के बारे में पढ़ा था, बट यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री इन वेक्टर नोटेशन। सो यहाँ पर जो 3D है का कॉन्सेप्ट है, उसमें मेनली हमारे पास है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में हम वेक्टर्स में भी कर चुके हैं। नाउ हमारे पास सपोज वी हैव ए लाइन joining any two points. Suppose this is A point and this one is B point. Coordinate of A are x1, y1 and z1, and coordinate of B are x2, y2 and z2. These are the coordinates of 2 points. This line is passing through A and B. हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने हैं। सो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। लाइन अगर 2 पॉइंट से पास करती है तो उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A and B। where A and B are 2 points are, क्या होंगे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो x2 minus x1, x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1। सो कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस से हम किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ये हमने वेक्टर में भी किया था कि अगर हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो उनको जो वेक्टर ज्वाइन करेगा हम उसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ वी आर स्टडिंग डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू A and B, where coordinate of A are x1, y1, z1 and coordinate of B are x2, y2, z2 will be x2 minus x1, यानी कि this point minus this point, y2 minus y1, this minus this and z2 minus z1, z2 minus z1. This will be the direction ratio of a line passing through 2 points A and B. Second, if a line has direction ratio, if a line has direction ratio as A, B and C, किसी लाइन के हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है और डायरेक्शन रेशियो क्या है ABC, then what will be the direction cosine of line? लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? Then direction cosines of line will be A upon under root of A square plus B square plus C square, B upon A square plus B square plus C square under root, and C upon under root of A square plus B square plus C square. These will be the direction cosine of a line. So अगर हमें किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे? A upon under root A square plus B square plus C square, B upon under root A square plus B square plus C square and C upon under root A square plus B square plus C square. These will be the direction cosine of line, right? तो डायरेक्शन कोसाइन हम इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। थर्ड, इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा विद एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस respectively. If a line makes angle xy, alpha, beta, gamma with x, y and z axis, then direction cosine of line, direction cosines को हम शॉर्ट फॉर्म में
DCS भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन विल बी, डायरेक्शन कोसाइंस को हम एलिमेंट से डिनोट करते हैं. सो L इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा, M इज इक्वल टू cos बीटा एंड N विल बी cos गामा. राइट, ये हमारा x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस and this point is z axis, and line is making angle so this is line, this line is making angle alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis. Then direction cosine of line will be L will be cos alpha, M will be cos beta and N will be cos gamma. Fourth, if direction cosines or direction ratio, if direction ratios of two lines are proportional, then lines will be parallel, right? That is, if line L1 has direction ratios A1, B1, C1, line L1 के direction ratio हैं L1, A1, B1, C1, and line L2 has direction ratio A2, B2 and C2, right? Then A1 upon A2, then if A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, then lines, then, or you can say, then L1 will be, L1 is parallel to L2. लाइन L1 किसके पैरेलल होगी? L2 के पैरेलल होगी. And fifth point is sum of the squares fifth point is if two lines passing through point A and point A and B, one line is passing through A and B and B and C, other line is passing through B and C. दो लाइन है, उनमें से एक लाइन हमारी AB से पास कर रही है एंड सेकेंड लाइन इज पासिंग थ्रू B and C, and AB and BC and AB and BC has proportional direction ratio, or you can say if direction ratios of AB and BC are proportional, then एक लाइन है हमारी कहाँ से पास कर रही है? A से और B पॉइंट से. सेकेंड लाइन हमारी BC पॉइंट से पास कर रही है, राइट? सेकेंड लाइन इज पासिंग थ्रू B एंड C. सेकेंड लाइन हमारी कहाँ से पास कर रही है? BC से. और AB और BC के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हैं, देन लाइंस, जब डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल. सो AB विल बी पैरेलल टू BC, देन AB इज पैरेलल टू BC. AB और BC पैरेलल होंगी. अब इस सिचुएशन में AB और BC तो पैरेलल नहीं हो सकती, सो C पॉइंट हमारा क्या होगा? इसी डायरेक्शन में कहीं आगे होगा, राइट?
क्योंकि बी पॉइंट मोर देन वन प्लेसेस पे नहीं हो सकता. ए बी, दिस लाइन इज ए बी, दिस लाइन इज बी सी. ए बी और बी सी पैरेलल हैं, सो आइदर कैन दिस सिचुएशन और कैन बी दिस सिचुएशन, राइट. बट बी पॉइंट मोर देन वन प्लेसेस पे नहीं हो सकता, सो हमारे पास सिर्फ ये पोजीशन पॉसिबल है. Then AB is parallel to BC, but B is common point. B is common point. So points A, B and C will be collinear. मतलब एक ही लाइन में होंगे, एक ही लाइन पे लाई करेंगे, राइट. पॉइंट ए बी सी हमारे क्या होंगे. सो कंक्लूजन हमारे पास ये निकला, if AB and BC has direction ratio proportional, AB और BC के direction ratio proportional हैं, then B being a common points will be collinear, एक ही line पे होंगे, right. Sixth point is sum of the squares of direction cosines is always equal to 1. डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम क्या होगा, हमेशा 1, राइट. सो फर्स्ट हमने फाइंड किया, इफ ए लाइन इज ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स देन हाउ टू फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन. डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन विल बी x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. इफ ए लाइन इज डायरेक्शन रेशियो एज abc, लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है, देन हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करेंगे, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, and c upon under root a square plus b square plus c square. These will be the direction cosine of line. If a line makes angle alpha, beta and gamma with x, y and z axis respectively, then direction cosines of line will be cos alpha, cos beta and cos gamma. अगर line different axis के साथ, so this is x axis, this point is y axis, this is z axis, and line is making alpha angle with x axis, beta angle with y axis and gamma angle with z axis. Then L will be cos alpha, M will be cos beta and N will be cos gamma. Next fourth point is direction ratio of two lines are proportional, then lines will be parallel. अगर दो lines के direction ratio proportional हैं, then lines क्या होंगी, parallel होंगी, right. Suppose L1 एक line है जिसके direction ratio क्या है 2, 4, 6, or you can say 2, 3, 5. L2 is other line whose direction ratios are 4, 6 and 10. So A1 upon A2 will be 2 upon 4, that is half. B1 upon B2 is 3 upon 6, half. C1 upon C2 is 5 upon 10, that is also half. So here A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to 7 upon C2, each is equal to half. Direction ratios are proportional, so lines are parallel. If AB and BC, if two lines have proportional direction ratio, if direction ratio of two lines are proportional and they have a common point, then points will be collinear. Next point हमारा क्या है, अगर दो लाइन्स के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हैं और उनमें एक कॉमन पॉइंट है, जैसे AB और BC के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है और B पॉइंट कॉमन है, तो पॉइंट्स क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे. कॉलिनियर मीन पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन. नेक्स्ट is sum of the squares of direction cosines is always equal to 1, right. These are the some basic formula for first exercise of 3D, that is exercise 11.1.